हेलो लर्नर्स, आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। ये आता है सब्जेक्ट लर्निंग अक्रॉस करिकुलम से। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसका रीज़न ये है कि इससे आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग इटसेल्फ आ जाएगा, करीबन 3 से 4 नंबर का। हो सकता है आप अगर यूनिवर्सिटी वेरी करेंगे तो ये 5-6 नंबर के मार्क्स भी आ सकते हैं। उसके अलावा ये टॉपिक एक 12 से लेकर 14 या 10 मार्क, जो भी आपके यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो मार्किंग स्कीम होगी लॉन्ग आंसर टाइप्स की, उसमें भी ये क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। माना जाता है कि जो लर्निंग अक्रॉस करिकुलम है उसका पेपर थोड़ा छोटा होता है, बट येट अगेन दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आइए चलते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग की तरफ। सबसे पहले हम सारे के सारे फैक्टर्स देख लेंगे। व्हाइल यू राइटिंग द आंसर्स आपको कोई माइंड मैप, फ्लो चार्ट या ऐसे कोई डायग्रामेटिक वे से इसे रिप्रेजेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि उससे जो चेकर है, जो एग्ज़ामिनर है, उसे बहुत अच्छा लगेगा वो चीज़ देखना और वो आपको ईज़िली मार्क्स दे पाएँगे। रादर देन आप सिर्फ़ वर्डिंग्स पे फ़ोकस करें, यू शुड मेक फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स आउट ऑफ इट। तो यहाँ पे मैंने 7 फैक्टर्स दिए हैं जो किसी भी बच्चे के किसी भी स्टेज पे लर्निंग का जो प्रोसेस होता है, जो सीखने का प्रोसेस होता है, वो कहीं न कहीं इन 7 फैक्टर्स के अराउंड रिवॉल्व करता है। जिसमें है साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, बायोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, सोशल, कल्चरल, फिजियोलॉजिकल, हेल्थ, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्ट्रक्शनल। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं कि एक इंसान या एक बच्चा किस तरीके से, कैसे लर्न कर पा रहा है। तो आइए इनको सबको एक-एक करके हम देखेंगे। पहला आता है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स समझने के लिए हमें सबसे पहले साइकोलॉजी क्या होती है वो समझना होगा। Psychology is a scientific study of human behavior and mental process. It studies how people think, feel, and act in different situations. Psychological जो word है, ये आपके ब्रेन से रिलेटेड वर्ड है, आपके मेंटल प्रोसेस से रिलेटेड वर्ड है कि आप अपने ब्रेन को किस तरीके से चला रहे हैं, किस बारे में आप क्या सोच रख रहे हैं, क्या आपका एक बिहेवियर है, क्या आपका एक आउटपुट है रिगार्डिंग सर्टेन थिंग्स। तो साइकोलॉजी होता है कैसे आप सोच रहे हैं, क्या आप फील कर रहे हैं और किस सिचुएशन में आप किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स वही मेंटल और इमोशनल फैक्टर्स या कंडीशंस होने वाली हैं जो इफेक्ट करेगी कि वो किस तरीके से क्या चीज़ लर्न कर पा रहा है। सिंपल वे में, दे आर द इनर फोर्सेस ऑफ द माइंड दैट इन्फ्लुएंस हाउ वेल वी लर्न। तो ये सिंपल तरीके से अगर हम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें, तो ये वो वे है हमारे दिमाग का किसी चीज़ के लिए प्रोसेस आउट करना, उस चीज़ को समझना, चाहे वो मेंटली हो, इमोशनली हो। इट्स ऑल रिलेटेड टू आवर ब्रेन एंड हाउ डज़ इट रिएक्ट और इट ट्राइज़ टू लर्न थिंग्स, ठीक है? इसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं जो फैक्टर्स हम पे बहुत डिपेंड करते हैं, दैट आर मोटिवेशन, इंटरेस्ट, अटेंशन, मेमोरी, इंटेलिजेंस, एटीट्यूड, इमोशंस एंड कॉन्फिडेंस। ये सारे के सारे फैक्टर्स साइकोलॉजिकली हमारे ब्रेन से रिलेटेड हैं एंड दे हाईली डिपेंड ऑन हाउ अ पर्सन लर्न्स समथिंग। अब ये एक-एक करके हम थोड़ा-सा डिटेल में पढ़ेंगे, रीज़न बीइंग आई टोल्ड यू इट इज़ अ वेरी लॉन्ग आंसर। आप इसे 12 से 14 नंबर में जब अटेम्प्ट करते हैं, यू नीड टू फिल अ लॉट ऑफ पेजेस विद अ लॉट ऑफ कंटेंट। हियर इज़ द कंटेंट। तो यहाँ पे हम धीरे-धीरे से चलते हुए समझेंगे। ईज़ी टॉपिक है, बट येस अ लेंथी वन एंड समथिंग दैट रेयरली नहीं, बहुत यूजुअली ये एग्ज़ाम्स में आ जाता है। सबसे पहला है मोटिवेशन। हाई मोटिवेशन बेटर लर्निंग, नो मोटिवेशन पुअर लर्निंग। बहुत ही सिंपल सा है। इफ अ लर्नर इज हाईली मोटिवेटेड, तो आप उसको जो भी सिखाना चाह रहे हैं, इन कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, डिफिकल्ट, इजी, मीडियम, वट एवर लेवल, वो उसको समझ जाएगा बिकॉज मोटिवेशन है। ही और शी इज विलिंग टू डू इट। बट इफ देर इज नो मोटिवेशन, नो मैटर हाउ easy the topic is, the person is not going to understand, the learner is not going to learn anything। अगर वो distracted है या he or she is not willing to contribute, not motivated, nothing can happen। नेक्स्ट आ जाता है इंटरेस्ट। ऑफ कोर्स इफ समबडी इज इंटरेस्टेड इन समथिंग, दे नेवर गेट बोर्ड ऑफ इट। ये स्टडीज में भी होता है, यूजुअली बच्चों के कई फेवरेट सब्जेक्ट्स होते हैं, तो दे टेंड टू स्कोर मोर इन दो सब्जेक्ट्स एंड लेस इन द अदर वंस। तो ये होता है बिकॉज देयर इज अ फैक्टर कॉल्ड इंटरेस्ट।
जब बच्चे को इंटरेस्ट है इन कॉन्सेप्ट्स, इन थ्योरीज, इन द प्रॉब्लम इन रिलेटेड टू दैट सब्जेक्ट, तो वो बहुत इंटरेस्ट से उसको परस्यू करता है. Whereas when there is lack of interest, no matter how easy the topic will be, the child won't be able to succeed. Next, attention. Very important, apart from motivation and interest, attention. The learner should be highly attentive. He should listen to the provider, to the educator. अगर वो ये चीज़ें नहीं कर रहा है, he is distracted, he or she is distracted towards something, no matter how well the person is educated in front of him and how well he or she is delivering the lecture, the learner will learn nothing. ठीक है, studying with phone notifications reduces attention. So of course, modern generation, जब इनके पास phone होता है and notifications pop up होती है, no matter how highly motivated you were, आपका attention जो है reduce होगा, you will be distracted easily. Next, memory. अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज फैक्टर्स, मेमोरी का भी रोल होता है. अगर आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है, यू कैन रिटेन अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, देन दैट्स समथिंग रियली गुड. But if there are some issues with the memory, then you tend to lose score, lose marks, or you tend to forget things sooner than they should be. तो मेमोरी का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. गुड मेमोरी हेल्प्स यू टू रिटेन इंफॉर्मेशन, whereas वीक मेमोरी will require a lot of revisions because वो आपको टाइमली अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करते जाना होगा, वरना वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएगा. एंड द मोमेंट इट हैज़ बीन 3-4 days आउट, अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो वो आपकी मेमोरी से आउट. Intelligence, higher ability to understand, faster is the learning, but practice can improve learning for everyone. Intelligence एक factor होता है. Sometimes by birth, a few kids are really special, but most of the time it is not the case. सारे almost equal होते हैं. 19-20 का फर्क होता है, slightest of difference होता है, but everybody is intelligent when you have all the factors accompanying you, when you are motivated, attentive, and you have interest in something. No matter what is your intelligence, you are going to score high. ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन्हें कहते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. साइकोलॉजिकल बिकॉज दे रिलेटेड टू योर माइंड, एंड इट इज हाउ योर माइंड थिंक्स, रिएक्ट्स टू अ सर्टेन सिचुएशन. ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं आपके लर्निंग प्रोसेस को. ठीक है, इसमें कुछ और हैं इमोशंस और एटीट्यूड, इसे भी आप एक बार पढ़ लेंगे. एंड नेक्स्ट, ये लास्ट एक जो कंप्लीट करने के लिए एक लाइन है इस टॉपिक को, वो है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और मेंटल एंड इमोशनल कंडीशंस दैट अफेक्ट हाउ वेल अ पर्सन लर्न्स. ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस करी थी लाइन, बट दैट्स हाउ यू एंड द फर्स्ट पार्ट. सेकंड है कॉग्निटिव एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स. पहले इन्हें समझेंगे. कॉग्निटिव फैक्टर्स क्या है? मेंटल एबिलिटीज, अगेन रिलेटेड टू थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन. They affect how a person receives, understands, stores and uses the knowledge. Now cognitive भी आपके थोड़ी मेंटल एबिलिटीज से ही जुड़ा है. थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग और उस इंफॉर्मेशन को आप किस तरीके से प्रोसेस करते हैं. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? जो वो कहते हैं कि एक कमरे में 3 लोग हैं, बाहर निकल गए, तो कितने रह गए, और ऐसे करके जो आप ब्लड रिलेशंस टाइप क्वेश्चंस करते हैं, वे यू रिक्वायर लॉट ऑफ थिंकिंग प्रोसेसेस. ऐसी ऐसी चीज़ें को कहते हैं कोऑग्निटिव फैक्टर्स, जो आपके ब्रेन से अगेन अटैच्ड है, लिंक्ड है. आइए, अटेंशन इसमें दोबारा से आ गया है. The better is the attention, the better is the understanding, learning and everything. Perception, how we interpret information. Percept करना होता है कि आपको दी गई information को आप किस तरीके से और क्या समझते हैं. ठीक है, करेक्ट परसेप्शन हेल्प्स क्लियर अंडरस्टैंडिंग. अगर आपको दी गई इंफॉर्मेशन को आपने सही तरीके से समझ लिया है, जैसे आपको मैथ्स के प्रॉब्लम्स दी जाते हैं, तो इन द इनिशियल स्टेज इट इज़ वेरी हार्ड फॉर अ चाइल्ड टू अंडरस्टैंड कि इसमें एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. तो उस टाइम पे अगर वो वर्ड प्रॉब्लम के स्टेटमेंट्स को ठीक से परसेप्ट कर लेता है, तो ही और शी विल बी एबल टू फिगर आउट कि इन 4 ऑपरेशंस में से व्हाट इज़ द ऑपरेशन दैट आई हैव टू डू इन द प्रॉब्लम. ठीक है, बट अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग में, उन लाइन्स की जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें ही कहीं कमी रह जाती है, डेफिनेटली द आंसर इज गोइंग टू सैक्रिफाइस. अगेन, क्योंकि ये ब्रेन रिलेटेड
था, तो इसमें मेमोरी का भी आना ज़रूरी था। गुड मेमोरी, गुड रिजल्ट्स। अ लिटिल बिट वीक मेमोरी, you need revisions for that. Thinking, how you're thinking, what is your reason, what are you reasoning after you get a problem, कि किस तरीके से क्या हो सकता है। किसी एक स्टेटमेंट के पीछे हर इंसान का अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है, अपना थॉट प्रोसेस हो सकता है। दैट इज व्हाट इज थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग इम्प्रूव्स अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि अगर आप बहुत ही बेफिजूल की बातें सोच रहे हैं तो आप उस प्रॉब्लम के एक लॉजिकल और लेजिटिमेट सोल्यूशन पे नहीं आएंगे। To get a legitimate and a logical solution, you also need to understand and think things logically, ठीक है। तो इंटेलिजेंस एंड द लैंग्वेज एबिलिटी में थोड़ा सा इट्स ऑल्सो अबाउट हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग इन वट्स एवर लैंग्वेज यू आर कम्युनिकेटिंग, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स। अगेन, हम इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं, we read a huge comprehension and then we don't know what is the synonym or antonym, तो वो गेस वर्क भी कर पाना कई बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज देयर एफिशिएंसी इन दैट लैंग्वेज इज़ वेरी लेस। तो आपकी जिस लैंग्वेज में भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो या चीज़ों को कॉम्प्रिहेंड कर रहे हो, उसमें आपकी एबिलिटीज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। ओके, कॉग्निटिव फैक्टर्स इन्फ्लुएंस हाउ वी थिंक एंड अंडरस्टैंड व्हाइल वी आर लर्निंग। नेक्स्ट हमारे पास बायोलॉजिकल फैक्टर्स आते हैं। Somewhat, yes, biological factors also play a role in learning, in the intelligence and the memory part of your life. But again, practice can neglect these factors and overshadow your success. ठीक है, तो अब यहाँ पे आ सकते हैं। Biological factors are physical and bodily conditions that affect learning. They are related to brain, body, health, heredity. Heredity is something that we get from our parents, ठीक है, via genes. Next, brain का development. Since we are in the mother's womb, वहाँ से हमारी development start होती है, month by month, actually week by week, and then later on also our brain keeps on developing. It gathers a lot of neurons in it, and then हमारी information वहाँ store होती जाती है, and layman language में कहें तो हम काफ़ी हमारा दिमाग बड़ा होता जाता है, ठीक है। तो दैट इज इम्पॉर्टेंट। हेरिडिटी जेनेटिक्स, डेफिनेटली क्या जीन्स पास हो रहे हैं हमारी जेनेटिक लाइन में, वो भी बहुत मैटर करेंगे कि हमारा किस लेवल का इंटेलिजेंस है, किस लेवल के हमारे थॉट प्रोसेसेस हैं। बट इट कैन बी डेफिनेटली नेग्लेक्टेड इफ वन प्रैक्टिसेस या ओवर प्रैक्टिसेस अबाउट समथिंग, so it's not necessary that you need to get it in your genes. It can be acquired through practice. Health is very important. A weak body will have a weak mind, so to get a healthy mind you need to have a healthy body with a good lot of nutrition in it, and fruits and vegetables, of course, a balanced diet and everything of such kind is very important. Next factors: nutrition, age, maturity, physical disabilities. Nutrition, again आपकी diet, age और maturity। थोड़ा-सा आप ये भी देखेंगे कि जो लर्निंग और सीखने का जो प्रोसेस है, वो एक एज पे, एक लिमिट तक का ही रिस्ट्रिक्टेड रहता है, बिकॉज़ योर ब्रेन हैज़ नॉट डेवलप्ड सो मच, यू योरसेल्फ हैज़ नॉट सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द वर्ल्ड। हाफ ऑफ द नॉलेज दैट वी एक्वायर व्हेन वी ग्रो अप आर थ्रू एक्सपीरियंसेस। तो जब आप छोटे होते हैं 40 साल के, सो यू हैव हार्डली हैड एनी एक्सपीरियंस, बट व्हेन यू आर 40 you have a great lot of experience about a lot of things. तो कहीं ना कहीं आपकी एज एंड मेच्योरिटी ऑल्सो मैटर्स कि आप कितना सीखे हैं और कितना सीख रहे हैं, और एक पर्टिकुलर एज पे कितना सीख सकते भी हैं। एंड देन फिजिकल डिसेबिलिटीज, अगर थोड़ी डिसेबिलिटीज हैं तो जाहिर सी बात है लर्निंग का प्रोसेस थोड़ा सा इफेक्ट यहाँ पर हो जाता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स यहाँ पे होते हैं आपकी बॉडी के आसपास जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, उसको हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स कहते हैं। ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स आपका घर, आपका स्कूल, योर वर्क प्लेस टाइप्स, या फिर आपका ट्यूशन सेंटर्स, आपकी सोसाइटी, आपका पीयर ग्रुप जो आपके पास है, वो सारी चीज़ें आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आती हैं। यानी आपकी बॉडी के बाहर का जितना भी एनवायरनमेंट है, दैट इज़ एनवायरमेंटल फैक्टर, और वो बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं ऑन हाउ यू आर लर्निंग, हाउ यू आर गेटिंग थ्रू अलोंग विद योर लाइफ। आइए देखते हैं होम का एनवायरनमेंट। इफ़ यू हैव
a supportive family, you'll have a better learning. Definitely. When you're growing up, you tend to lose track of things. You tend to go after everything that you see. I want to do this, I want to do that, I want to play tennis. The next day, you want to play football. The other day, you wanted to play chess, basketball. Everything can be learned. When it comes to learning, everything can be learned only when you have a supportive family. Only when they understand that a particular age group requires a particular type of dealing. So yes, जब आप एक सपोर्टिव फैमिली में होंगे तो आपकी बेटर लर्निंग हो सकती है आपको सब गेम की प्रैक्टिकल नॉलेज होगी क्योंकि आपने सारी खेली हैं बचपन में. So that's no harm, but it can only be achieved if you have a supportive family. At times when you don't have a supportive family, there can be some bad effects on learning. ठीक है. नेक्स्ट इज स्कूल का एनवायरनमेंट. स्कूल्स एनवायरनमेंट मैटर्स अ लॉट. ठीक है. वहाँ से आपको बहुत अच्छा बूस्ट मिलता है व्हेन यू हैव गुड टीचर्स, गुड डिसिप्लिन इन द स्कूल. ठीक है. फैसिलिटीज इन द स्कूल, क्योंकि कई बार बच्चे पीयर प्रेशर में ही आधी चीज़ें कर लेते हैं स्कूल में. सो डेफिनेटली यू टेंड टू लर्न in school a lot more than you can learn at home. Check it. There you have a very sportive and cutie environment, but in school you have a competitive environment. Supportive but competitive, where you have different people, different kids around you who are doing a lot of things, and then you choose for yourself also a few of them, and then you try to excel via learning. Next, classrooms at atmosphere. क्लासरूम्स एटमॉस्फेयर में आ जाता है जब आप अपने लोग बच्चों के साथ इधर उधर इंटरेक्ट कर रहे हैं अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ. तो आप एक्टिवली अपनी टीचर से भी लर्न कर रहे हैं. साथ बाय साथ जब हम एक मेथड आते हैं जैसे फिश बोल मेथड, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिंग मेथड्स, पीयर टू पीयर टीचिंग मेथड्स, इन सब से भी हम लर्निंग के प्रोसेसेस को अचीव कर सकते हैं. So this is the classroom atmosphere that is very helpful in learning. Peer groups, of course, friends, if you have a good peer group, you are going to definitely excel in life. But if you have distracting friends, then there can be issues. But yes, इसको monitor करने के लिए we have our teachers and our parents, so they are always there with their guiding light. Then you have teaching methods and the physical environment. Teaching methods यहाँ पे क्यों include किया गया है? Because if the teacher is not focusing on the weak points, and if the teacher could not identify where the child is lacking or what he or she needs more of attention to, then also the process of learning can be hampered. So यहाँ पे जब आप बी एड प्रोग्राम्स में इनरोल हैं, आपको यही चीज़ें सिखाई जा रही हैं कि एक बच्चे को पढ़ाया कैसे जाए. Every child is going to be different. So how to deal with this n number of differences? Okay. So yes, teaching methods may vary from child to child's requirement, but it is a very important factor in the process of learning. Next, आपके physical environment जो lightings, proper ventilation, beddings, sanitation और ये सारी चीज़ें आपके और physical environment में आ जाती हैं. सोशल फैक्टर्स की बात करेंगे. सोशल फैक्टर्स क्या है? इट इज़ कमिंग फ्रॉम द पीपल अराउंड द लर्नर एंड देयर इंटरैक्शन. बहुत मायने रखता है. Nowadays we have come forward in a very gloomy light of neglecting what people says and people thinks, but otherwise this factor was really very important a long time ago. और कहीं ना कहीं आज भी it is the base of how one shapes his or her life and thoughts. तो family का background, family's background matters a lot. How much supportive they are, what kind of restrictions they have, what kind of views they have on certain topics that the child will face at different stages of life. So, a family's background is very important because the home is the first place where the child starts learning. And if the environment is negative, then all the negative thoughts are going to be sown in the child's life, and they are going to bloom. But if the seeds are good, then good plants are going to bloom. Then is your friends. ये
वाला ग्रुप बहुत ज़्यादा मैटर करता है। रीज़न बीइंग, यहाँ से लर्निंग इज़ वेरी क्विक, बी इट गुड और बैड, the learning process is really quick. If your friend is doing something wrong, you'll learn it quickly. If the child's friend is doing something good, he'll learn that too quickly. So a peer group is very important factor, very important social factor when it comes to the topic learning. Teacher student relationship, this should also be good, because if the student is not able to convey where he or she lacks, what are the problems he or she is facing, then there is no point a teacher can help in the process of learning. There will be a gap, a communication gap, a barrier in the process of learning, and the child will go down. So, the teacher student relationship should also be really good. Society's expectations and social interaction. Society plays a very important role because the child learns what to limit and what not to limit according to the society, though this should not matter. But yes, there are certain limitations and factors that the society has put forward कि matter करने चाहिए. So social interactions are also the interactions that you have with people. जब आप social gatherings में जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, so there are different type of experiences that you are facing. नेक्स्ट इज कल्चरल फैक्टर्स। कल्चर फैक्टर्स होता है कि आप किस बिलीव्स, किस वैल्यू और ट्रेडिशन और कस्टम्स को फॉलो करते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी स्टेट, आपका कल्चर, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपकी कम्युनिटी क्या है। तो ये सारी चीज़ें कल्चरल फैक्टर्स में आती हैं। ठीक है, इससे आप कैसे इफेक्ट होते हैं? लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज में हो सकता है व्हेन योर मदर टंग इज तमिल, when your mother tongue is Punjabi, that is the language that you have heard since your birth. Okay, you um, when kids are very young, तो उनको सच में जो वर्ड्स हैं वो सुनाई देते हैं, so they learn at home. So हो सकता है a child can learn better in their mother tongue as compared to you're forcing some Punjabi child to learn English on a band 9 IELTS. So yes, this is also really important कि आप किस language में बच्चे से interact कर रहे हैं. At times, you may switch your mother tongue or you may switch languages for better understanding. Values and beliefs depends on from which background the child is. किन बातों में वो विश्वास रखते हैं और किन बातों में नहीं. Traditions and customs, these are the cultural practices that influence the study habits and the priorities. Traditions and customs. Customs होते हैं क्या क्या रिचुअल्स हम अपने घर में फॉलो कर रहे हैं, कि हम 7 बजे ही खाना खा लेते हैं, उसके बाद सो गए हैं, then there is no time for homework. हम 11 बजे खाना खाते हैं, I cannot get up early for school. ये कुछ हैबिट्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, ट्रेडिशंस हैं हमारे घर के, जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं करेक्ट होना फॉर द बेटर लर्निंग ऑफ द चाइल्ड. ओके, नेक्स्ट वी हैव attitude towards education and gender roles. Attitude towards education is an important point. Reason being, if the background, the parents are not serious about the education, then जो टाइम बच्चा स्कूल में स्पेंड कर रहा है वो तो परफेक्टली चला जाएगा क्योंकि वो एक गाइडेंस के अंडर है. बट व्हाट अबाउट द हाफ डे ही स्पेंड्स एट होम, व्हाट अबाउट द हाफ डे ही और शी इज स्पेंडिंग एट होम, क्या वो कोई ये जेंडर रोल ड्यूटीज कर रहे हैं? आर दे टू डिस्ट्रैक्टेड दैट दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग, रिवाइजिंग, डूइंग होमवर्क्स, डूइंग प्रोजेक्ट्स? तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है कि एजुकेशन के लिए आपका क्या एटीट्यूड है, क्या बिलीव्स हैं, क्या वैल्यूज़ हैं उसके लिए, और जेंडर रोल भी, कि क्या घर पे लड़का और लड़की में भेदभाव किया जा रहा है, द बॉय इज गेटिंग इनफ टाइम टू स्टडी, डू वर्क, प्ले एंड एवरीथिंग, बट द गर्ल चाइल्ड इज इन्वॉल्व इन ऑल द होमली ड्यूटीज, ऑल द हाउस होल्ड चोर्स. क्या ये डिफरेंस है? So this is also something that is very important when it comes to the cultural factors. Okay, so this is how you conclude the both. Social factors come from people around us, while the cultural factors come from the traditions and values of society that influence learning. Now we have physiological and health factors.
Okay, these factors, sociological factors, and they are the physical conditions of the body. Physiology stands for the physical. Physical. Physiology factors are the physical conditions of the body that helps या affects the learner's ability to study and learn. क्या फिजिकल इश्यूज हैं आपकी बॉडी में या क्या चीज़ें अच्छी भी हैं जो आपकी लर्निंग में इफेक्ट करेगी. एज एंड मेच्योरिटी ऑफ कोर्स एट अ सर्टेन एज आप एक सर्टेन लेवल का ही अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है आप उसको लर्न कर सकते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं. एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मेच्योरिटी चाहिए फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क. तो वो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. दैट इज़ फिजियोलॉजिकल फैक्टर. ब्रेन का डेवलपमेंट यू नीड, अगर तुम्हें आइंस्टाइन की इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर न्यूटन के थर्ड लॉ पढ़ने हैं, सो यू नीड टू गेट अप टू अ पर्टिकुलर एज. यू मस्ट अटेन maturity. Otherwise, nobody is going to understand that at the age of 3 or 4. Okay. Then you have sensory abilities, vision and hearing. They should be good, perfect. If they aren't, then the process of learning might slow a little bit. Okay, then you have physical fitness, fatigue. Fatigue is tiredness. This is word is fatigue. Fatigue is tiredness. क्या बच्चा 5 मिनट में ही थक जाता है? Is he hyperactive, hypoactive? What kind of a child is he? So ये भी आपकी learning abilities को बहुत affect करती है. And when it comes to fatigue and tiredness, rest भी बहुत important. It doesn't mean that क्लास 1 के बच्चे को सीधा 10 घंटे की पढ़ाई करा दो एग्जाम से एक दिन पहले. That's not the way, that's not the value, that's not the cultural ethics also, and that's the wrong approach. These are some health factors. ठीक है. As I said, this answer is going to be really long. तो जब आप अपने papers में ये लिख कर आते हैं, you need to make flow charts and you need to explain all these given here. So these are the health factors that influence learning: good health, nutrition, exercise, mental health, and sleep. A proper amount of sleep of 6 to 8 hours is important. A balanced diet with all the nutrition is important. Good health, you need to exercise timely, you need to have a perfect BMI ratio. So all these things matter. There are some other factors called technological factors कि technology कैसे influence कर रही है learning के process को. Is it just the notifications are coming and the child is getting distracted? No, there are other uses also. जैसे कि online learning, very viral since COVID. इंटरैक्टिव टूल्स लाइक स्मार्ट बोर्ड्स एंड एप्स स्कूल्स में इंस्टॉल्ड होते हैं. ठीक है, ऑनलाइन टीचिंग के लिए भी यूज़ किए जाते हैं. दे आर वेरी हेल्पफुल बिकॉज यू कैन सी वीडियोज, you can have live tests and a lot of things can be done on these things. ठीक है, उसके अलावा we have AI and chatbots. mm, Not highly supported, but yes, when it comes to taking help, you can take help. But when it comes to totally relying on it, then it's the worst thing ever. Connectivity, you need internet access to a lot of things, right? Then you have educational resources like videos and ebooks. YouTube, of course. So these are the technological factors जो आपके learning के process को aid कर सकती हैं, boost कर सकती हैं. Okay, so this is a very long answer when it comes to writing for the exam. But yet again, if you watch this video, I hope this helps you really. So thank you.